एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीपीएससी मेंस पेपर 4 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मेंस में जो पूछे हुए हैं सो इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इनसाइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इनसाइट, हाउ डज इट हेल्प्स इन मोरल सिचुएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो आपको क्या समझ में आता है मोरल इंसाइट से, और ये किस तरीके से हेल्प करता है मोरल सिचुएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। मोरल सिचुएशंस को हेल्प करता है सिविल सर्वेंट्स के। ये यूपीपीसीएस 2023 में 125 शब्द में लिखने को आया था 8 मार्क्स का। तो मोरल इंसाइट रिफर्स टू द एबिलिटी। तो मोरल इंसाइट जो होती है ये रिफर करता है एबिलिटी टू डिसर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग। तो मोरल इंसाइट जो है ये रिफर करता है, ये एबिलिटी है और ये बताता है कि गलत चीज़ों और सही चीज़ों को कैसे अलग अलग किया जाता है। मेक एथिकल जजमेंट, क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ को जानने में मोरल इंसाइट जो है मदद करता है। और एथिकल जजमेंट बेस्ड ऑन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ को हमको बताता है, और उस अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले पाते हैं अपने मोरल इंसाइट की मदद से। ये अंदरूनी फीलिंग जो होती है उससे। इट इन्वॉल्व्स हैविंग अ कीन परसेप्शन ऑफ एथिकल डिलेमास and the implications of one's action on others and society as a whole। तो जो मोरल इंसाइट्स है ये इन्वॉल्व करते हैं हैविंग कीन परसेप्शन ऑफ एथिकल डिलेमास and implications of one's action on others and society as a whole। For civil servants, moral insight play a crucial role in navigating complex ethical situations they encounter in their roles। Here's how it is beneficial। एथिकल डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा करता है। इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट में मदद करता है। नेविगेटिंग एथिकल ग्रे एरियाज, रेजिस्टिंग अनएथिकल प्रेशर्स, प्रमोटिंग पब्लिक गुड। तो जो मोरल इंसाइट है ये क्रूशल रोल प्ले करता है इन नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स एथिकल सिचुएशन दे एनकाउंटर इन देयर रोल्स। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग, सिविल सर्वेंट्स के अंदर मोरल इंसाइट जो है ये काफ़ी ज़्यादा काम का होता है, और ये एथिकल डिसीजन मेकिंग में सिविल सर्वेंट्स की मदद करता है। सिविल सर्वेंट्स ऑफन फेस डिसीजंस दैट इन्वॉल्व्स completing interest or ethical considerations। Moral insights enable them to weigh these factors thoughtfully, making decisions that aligns with ethical principle and greater good। Integrity and trustworthiness, civil servants are expected to uphold high standards of integrity। Moral insights help them to act with honesty, transparency, and accountability, fostering trust among the public they serve। Navigating ethical gray areas, sometimes situations aren't clearly right or wrong। Moral insights equip civil servants to navigate these gray areas by critical assessing situations and making ethical choices even in ambiguous circumstances। तो ये जो ग्रे एरियाज है, नेविगेटिंग एथिकल ग्रे एरियाज, समटाइम्स सिचुएशन आरंट क्लियरली राइट और रॉन्ग। तो मोरल इंसाइट्स इक्विप सिविल सर्वेंट्स टू नेविगेट these gray areas by critically assessing situations and making ethical choices even in ambiguous circumstances। Resisting unethical pressures in the public sector, there might be pressures to act against ethical norms। Moral insights empower civil servants to resist such pressures, standing firm in their commitment to the ethical behavior। Promoting public good, civil servants have a responsibility to work for the betterment of the society।
Moral insights guide them to prioritize the public good over personal and conflicting interest. Promoting public good. So civil servants have a responsibility to work for the betterment of the society. Moral insights guide them to prioritize the public good over the personal conflict of interest. तो कंक्लूजन के अंदर हम देखेंगे कि ओवरऑल द मोरल इंसाइट इज द फाउंडेशनल ट्रेट फॉर द सिविल सर्वेंट enabling them to make principled decisions, maintain public trust, and uphold ethical standards while serving the community. Moving to the next question, examine the relevance of the following in the context of civil services: spirit of service or courage of firm conviction. यूपीपीएससी 2023 में 125 वर्ड्स 8 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज. स्पिरिट ऑफ सर्विस. स्पिरिट ऑफ सर्विस मतलब सर्विस करने की जो स्पिरिट है उस पर बात करनी है. एंड करेज ऑफ फर्म कन्विक्शन. आंसर: इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज बोथ spirit of service and the courage of firm conviction hold immense relevance. तो ये दोनों बातें जो हैं, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड द करेज ऑफ फर्म कन्विक्शन, ये दोनों ही बहुत ही रिलेवेंट है और सिविल सर्विसेज में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. तो स्पिरिट ऑफ सर्विस पब्लिक गुड focus, dedication and commitment, accountability and responsibility. तो ये जो स्पिरिट ऑफ सर्विस है इसकी वजह से पब्लिक गुड फोकस होता है, पब्लिक की भलाई जो है उस पर फोकस की जाती है. डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. करेज ऑफ फर्म कन्विक्शन से हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? तो एथिकल डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप एंड इनिशिएटिव्स, रेजिस्टिंग एडवर्स प्रेशर्स को हैंडल करने में फ़ायदा मिलता है या फिर हैंडल किया जा सकता है इससे. तो स्पिरिट ऑफ सर्विस, पब्लिक गुड फोकस. सिविल सर्वेंट्स आर इंटरेस्टेड विथ सर्विंग द पब्लिक. द स्पिरिट ऑफ सर्विस emphasizes a commitment to well-being of the community over personal interest. तो पब्लिक गुड फोकस, civil servants are entrusted with serving public. The spirit of service emphasizes a commitment to well-being of the community above the personal interest. It motivates civil servants to work tirelessly for the benefit of society. Dedication and commitment. Service-oriented individuals in civil services often go beyond their call of duty. So service-oriented individuals in civil services often go beyond their call of duty. Dedication and the commitment. So service-oriented individuals in the civil services often go beyond their call of duty to address societal needs. This spirit drives them to find innovative solutions, be responsive to the citizens' concern, and deliver services effectively and efficiently. तो ये जो डेडिकेशन और कमिटमेंट है ये सर्विस ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं सिविल सर्विस में ऑफन गो बियॉन्ड देयर कॉल ऑफ ड्यूटी टू एड्रेस सोसाइटल नीड्स. और दिस स्पिरिट ड्राइव्स देम टू फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस, बी रिस्पॉन्सिव टू द सिटीजन्स कंसर्न एंड डिलीवर सर्विसेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. Accountability and responsibility. The spirit of services reinforces the idea that civil servants are accountable to the public. It instills a sense of responsibility in ensuring that resources are used judiciously and that policies and actions contribute positively to the lives of citizens. Courage of firm conviction, ethical decision making. Civil servants encounter situations where they must make tough decisions that align with their convictions and ethical principles. Having the courage to stand by these convictions even
in the face of opposition is crucial for maintaining the integrity and ensuring ethical conduct. Leadership and initiatives. Civil servants with firm conviction have the courage to take the lead, initiate changes, and implement policies that they believe will benefit society. This courage is vital in driving reform and progress with the bureaucratic system. Resisting adverse pressures. There might be instances where civil servants faces pressure that compromise their beliefs or values. The courage of firm conviction empowers them to resist such pressures and uphold what they believe is right, contributing to the more principled and ethical governance. The spirit of service and the courage of firm conviction are essential qualities that complement each other in the civil services. They inspire dedication, ethical behavior, and the commitment to the greater good, fostering a more accountable, responsive, and the effective public administration. Moving to the next question, a child learns values by what he observes around him. तो एक चाइल्ड के अंदर, एक बच्चे के अंदर जो एनवायरनमेंट जैसा होता है वैसे वैल्यूज़ उसके अंदर जाते हैं. Discuss the role of family and society in the formation of values in the light of this statement. तो यूपीपीएससी 2023 का 8 नंबर का क्वेश्चन. The environment a child grows up in significantly influences their value system. Here, how the family and the society plays pivotal role in shaping the child's value. तो जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वैसे ही वैल्यूज़ इनकलकेट होते हैं बच्चे के अंदर. फैमिली एंड सोसाइटी का क्या रोल है उसको हम देखते हैं. फैमिली, द प्राइमरी इन्फ्लुएंस जो है फैमिली का ही जाता है. मॉडलिंग बिहेवियर, जैसा फैमिली में बच्चा देखेगा वैसा ही बिहेवियर जाएगा. डायरेक्ट टीचिंग, इमोशनल नर्चरिंग. और अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटल इंटरेक्शंस से वैल्यूज़ इनकलकेट होते हैं. कल्चरल इन्फ्लुएंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. तो प्राइमरी influence, families serve as the first and the most influential environment for a child. Children observe and absorb values through interaction with parents, siblings, and extended family members. Modeling behavior. Children often imitate the behavior, attitude, and values demonstrated by their family members. Parents' action, beliefs, and interactions become the initial template for a child's understanding for what is right and wrong. Direct teaching. Families actively teach values through direct communication, storytelling, and moral lessons. Parents often impart values explicitly, shaping a child's moral compass. Emotional nurturing. The emotional environment within a family deeply impacts a child's value. Feeling of love, empathy, respect, and compassion demonstrated within the family unit significantly influences the child's understanding and these values. बात करें सोसाइटी की तो सोशल इंटरेक्शन. बियॉन्ड द फैमिली, सोसाइटी एट लार्ज, पीयर्स, teaching, religious institutions, media play a crucial role. Children observe and learn from the behavior and the values of those around them, broadening their understanding of the societal norms. Cultural influences. Cultural practices, traditions, and societal norms provide a framework for understanding values. Children learn about societal expectations and moral code by observing and participating in the cultural events and traditions. Educational institutions. Schools and educational settings serve as environments where children encounter diverse perspectives and values.
Teachers, curricula, and school activities contribute significantly to the child's value formation. Media and technology. In today's digital age, media, including television, internet, and social media, heavily influence child's value. Exposure to the various content shapes their perception of societal norms and behavior. In essence, the family serves as the foundational influence on the child's value, providing the initial framework. However, society, including peer educational institutions and broader cultural influence, expanding and reinforcing these values, shaping child's understanding of ethics, morality, and social norms as they grow. Both environments work in tandem to shape child's value system, emphasizing the importance of positive role models and supportive societal structure in fostering healthy value development. Moving to the next question. In the era of globalization, international ethics is the need of hour for ensuring peace and stability among the nations. Explain critically. तो इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंटरनेशनल एथिक्स जो है ये आज की ज़रूरत है फॉर ensuring पीस एंड स्टेबिलिटी among द नेशंस. इसको क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है. तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंटरकनेक्टेड नेशंस in unprecedented way, leading to increased interdependence economically, socially, and politically. In this context, notion of international ethics becomes crucial for fostering peace and stability among nations. Here, critical exploration of this statement, interconnectedness and interdependence. Here, critical exploration of this statement, interconnectedness and interdependence, conflict resolution and diplomacy, human rights and global justice, environmental conservation and sustainability, ethical governance and accountability, challenges and criticism. To interconnectedness and the interdependence, globalization has blurred traditional boundaries, making nations reliant on each other for trade, resources, and technology. International ethics, which encompasses principles of mutual respect, cooperation, and fairness, becomes essential for managing these interdependencies. Conflict of resolution and diplomacy. International ethics provide framework for resolving conflicts peacefully. Adhering to the ethical principles in the diplomacy and negotiations can mitigate tension and prevent dispute from escalating into the conflicts. Human rights and global justice. Globalization exposes disparities and injustice worldwide. International ethics emphasizes the importance of upholding human rights, social justice. Globalization exposes disparities and injustice worldwide. International ethics emphasizes the importance of upholding human rights, social justice, and equality across border, ensuring fair treatment and uh, dignity for all individuals, irrespective of nationality, becomes imperative for global stability. Environmental conservation and sustainability. Global challenges like climate change, pollution, and resources depletion requires collective actions. International ethics promotes responsible environmental stewardship and cooperation to address these issues for long-term benefits of all nations. Ethical governance and accountability. Ethical conduct in governance, both domestically and internationally, is pivotal. Transparent, accountable, and ethical governance practice among nations foster trust and stability in the global interactions. Challenges and the criticism. Critics argue that defining universal ethical standards across diverse cultural and political systems can be challenging. Conflicting interest among nations might hinder the application of
shared ethical values. Some nations prioritize self-interest over ethical consideration, leading to the ethical dilemmas in the global decision making and cooperation. The concept of international ethics is crucial in promoting peace and stability among nations. Is globalized world. Its practical implementations faces challenges. The need for shared ethical framework guiding interactions among nations is evident, but achieving consequences and navigating diverse interests remains ongoing challenges. However, despite these obstacles, the pursuit of international ethics remains a fundamental goal for fostering a more peaceful and stable global community.